Hi guys, this is Deepak Dhingra from 91 Mobiles, and today I have with me Mr. Sudhir Goel. He's the Chief Business Officer at Acer India, and we're going to quiz him on a few things, especially focusing on the so-called new normal and how Acer India has been tackling the new, the new normal or whatever you call it. So, Sudhir, how do you think buyer behavior has changed, especially as far as consumer laptops are concerned in India? How has the buyer behavior changed in the past few months? Buyer behavior, not only for the laptop, but generally post COVID has changed. People are getting used to live with the reality of COVID-19. Number one, they have become more mindful of what they are buying because of uncertainties and in the marketplace and on the economies. I think it has brought two major shifts in their behavior. The first is, of course, reluctance to shop in the crowded store, and it implies that there is an increased propensity towards going digital. And you think there's a significant increase in the demand as well? Yes, I think irony is that despite, I mean, because the pandemic, not a very healthy situation to be in, but the demand for the laptop has definitely gone up. I mean, the adoption rate has gone up primarily because of number one, the work from home, less of socialization, which is possible because of the either the lockdowns or otherwise because of psychological reasons. And hence the need for the gaming, I mean, the casual gaming or the serious gaming. And the education which was let's say at least up to the kindergarten was still offline or the school based education and have also shifted towards the online, and hence again a need for a laptop at home for a student. Even if I mean even in the metros where let's say many of the households might have had one laptop, but today if there are three people in the house, all of them require. I know the second and third equipment buying has also gone up. आई थिंक ये आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि काफी परसेप्शन ये भी हो गया है कि जैसे स्मार्टफोन होते थे, दैट स्मार्टफोन इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ पर्सनल डिवाइस, क्योंकि सबको अपने अपने डिवाइस की पर्सनल डिवाइस की जरूरत है, सबकी अपनी क्लासेस हैं, अपना ऑफिस है, अपना वर्क है. पहले मोबाइल को हम यूज करते थे काफी सारी चीजों के लिए, विच वाज राइट, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए. तो नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्पेंडिंग नाउ on the device either for entertainment, for gaming, for browsing is much higher. So when the number of hours is increasing, of course a smaller screen device like the mobile phone is not apt. सुधीर, ये बताइए कि जो डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स हैं, जैसे हम लोग टू इन वन की बात करते हैं या कन्वर्टेबल्स की बात करते हैं, तो पिछले कुछ महीनों में इनमें कुछ शिफ्ट आया है इनकी डिमांड में या इनके यूजेज में पहले के कंपैरिजन में? देखिए, ऐसा है कि चाहे वो 2-in-1 हो या कन्वर्टेबल हो, हर एक का एक अपना एप्लीकेशन और एक कस्टमर सेगमेंट होता है जो कि स्पेसिफिक यूजर्स जो उसका आइदर फ्रॉम द एप्लीकेशन या उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. फर्स्ट टाइम बायर्स हैव डेफिनेटली गॉन अप बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड उनका जो फर्स्ट चॉइस होगा वो फर्स्ट इक्विपमेंट जो दे विल बाय इज ऑब्वियसली द क्लैमशेल. द सेकंड सेट ऑफ यूजर्स वुड बी जहां पर कि लोग जो हैं ऑलरेडी एक यूज कर रहे थे लेकिन अब वो ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं, and mobility within the house they want. But I would still say, I mean, the market across the various form factors वो बढ़ रही है. आपको लगता है कि जो पहले डिसीजंस मैटर, जिस बेसिस पे लोग अपने डिसीजन बेस फॉर्म करते थे लैपटॉप परचेज के लिए, वो शायद थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है? यू थिंक ऐसा कुछ शिफ्ट आपको नजर आ रहा है ऐसे सेगमेंट में? हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस में देखते हैं तो पोर्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, एंड इसलिए लोग जो है लैपटॉप को प्रेफर कर रहे हैं. तो द बैटरी लाइफ इज स्टिल एन इम्पोर्टेंट, एंड अगर हम कुछ इंटीरियर में जाएं जहां पर कि हमने देखा आज की तारीख में मार्केट एक्सपेंशन काफी ज्यादा हुआ है, वहां पर पावर का अनसर्टेनिटी या रिलायबल पावर की अभी भी एटलीस्ट परसेप्शन दिमाग में है, और जब आप ले रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं एक बैटरी लाइफ और पोर्टेबिलिटी दोनों की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके. स्पेशली फॉर द सेट ऑफ कस्टमर जो कि अपना सेकंड इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं या थर्ड इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं, उनके लिए वो थिन एंड लाइट वेट इज बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट. ऑफ कोर्स बैटरी रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एनी लैपटॉप बायर. मुझे ये बताइए कि इस सिनेरियो में एसर यूजर को ज्यादा चॉइस देने के लिए क्या कर रहा है? व्हाट आर द स्टेप्स दैट एसर इंडिया इज टेकिंग कि यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिले? एसर has always worked on developing the solutions looking at the
needs of a customer. So getting a technology closer to the marketplace and offering the fresh technology to them has been always our motto or our theme. We analyzed and tried looking at, let's say, what are the new segments. There's a market which is, we know is about thin and light, which is where we have the thinnest laptop Swift, which is available. At the same time, we said there are two additional segments which are there. So let's say the first segment was actually the gaming. So obviously the और जो शायद थोड़े बहुत casual gamers मोबाइल फोन पे खेलते थे, वो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए हैं. So तो एक तरफ जहां सीरियस गेमिंग सेक्शन हमारा बहुत मतलब काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट लोगों की आने लगी है. जो प्रेडेटर के अलावा जो हमारी फ्लैगशिप सीरीज थी, उसके अलावा नाइट्रो और एस्पायर 7 दो हमने एडिशन की हैं. थिन एंड लाइट जो कि एक रिक्वायरमेंट है, स्विफ्ट सीरीज ऑब्वियसली उनका रिफ्रेश किया गया है. तीसरा जो सबसे बड़ा सेगमेंट दीपक जी आया है हमारे हिंदुस्तान में, वो है एजुकेशन के लिए, लर्न फ्रॉम होम. स्कूल एजुकेशन जो था वहां पर अभी तक हिंदुस्तान में अभी स्कूल्स नहीं खुले हैं, लेकिन काफी सारे स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया है. एंड ऐसा माना जा रहा है कि ये शायद एक नया नॉर्मल होगा. अगर आप HRD मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स देखें या जितने भी और एजुकेशन एक्सपर्ट से बात करें, वो लगता है कि शायद हिंदुस्तान में वो दिन आ गए हैं कि अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा. इसको देखते हुए जो पेरेंट्स हैं वो उसमें अब दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू इन्वेस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ the product should be made available to the lowest starter of the economy. उसके लिए हमने अपने Acer 1 और Extensa series during the last 4 months और 5 months of the pandemic हमने वो लॉन्च किए हैं, जिनका की ऑब्जेक्टिव है कि हम जो टेक्नोलॉजी है उसको हर हाउस होल्ड तक पहुंचा सके. सो Acer 1 which is on a Pentium Gold, a good performance this thing, and the Extensas. So these two series we have launched primarily addressing towards the consumer who are buying the laptop for their education, and therefore it provides a performance and a value. A complete notebook in a 15-inch kind of a form factor with a performance and the storage availability. And at the same time दूसरी जो है जो गेमिंग सेक्शन, जहां पर कि हमने कहा कि नाइट्रो और एस्पायर 7 के साथ besides Predator we have launched, ताकि हम जो पूरा सेगमेंट है उसको कवर कर सके. And of course, our flagship Aspire series continue to take care of the mainstream. Acer ने कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ शिफ्ट किया है यूजर्स को ज्यादा अवेयर कराने के लिए, टू इन्फॉर्म देम अबाउट द बेनिफिट्स या वैल्यू प्रोपोजिशन जो Acer के नोटबुक्स प्रोवाइड करते हैं. So as a marketer, we need to make sure that we take the appropriate measure to keep customers engaged and reminded that we are here to take care of their needs. We want to keep the customer engaged, and that's why a lot of stress on the social media communication, marketing communication or marketing messaging, which we have done. And obviously, we have come up with new game plans to guide our current and post marketing and loyalty strategies, which is to respond, recover, and reorient. And just to say, I mean, it's slightly too early to say, but we have exciting plans for festive season, and you would see a new face to represent our brand. And we hope, this announcement will happen soon. So just the last question from my side. What do you think the future holds short term में laptop, consumer laptop segment इंडिया का कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है? इसका आंसर देने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा इंडिया में जो पीसी का पेनिट्रेशन है वो अभी भी जो डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें वन ऑफ द लोएस्ट है. हम आज देखेंगे हर एक घर में लगभग ऑलमोस्ट हर मेंबर के पास एक फोन होगा. So the current situation is making this vibrant shift in the behavior. So even if when we are out of this pandemic, these behavioral changes of spending more duration or longer duration in front of PCs, I think that's inevitable. So first of all, in the short run, of course, we have seen the need for this people have felt the need, and both for entertainment, for work, as well as for learning. This adoption of the technology has also become a norm, and therefore as we move forward, both in the medium term till the time our penetration in India reaches to a desired level of what is in line with the global penetration levels, we would continue to see a growth in the laptop market segment. It is definitely going to move towards, it is moving towards the let's say one equipment per user, but it will continue to do that till the time let's say we have a good amount of penetration in India. All right. Thanks so much, Sudhir, for sparing the time and giving us all those insights into the consumer laptop segment in India.
Guys, that was Sudhir Goel, the Chief Business Officer at Acer India. Thanks for watching. Thanks, Thank you, Sudhir. Deepak. Thanks for your Thank you. time. Thanks a lot. Thank you. Bye Bye. bye.